Hello, good evening students. थ्योरी ऑफ मशीन के इस लेक्चर में आज हम लोग हार्टनल गवर्नर और एक प्रोयल गवर्नर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हार्टनल गवर्नर के हम डिस्कशन करेंगे कि हार्टनल गवर्नर क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे हार्टनल गवर्नर पे। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कि प्रोयल गवर्नर क्या होते हैं और कैसे कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसका, और कैसे वो वर्क करते हैं, है ना। तो एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था सिंपल, आज एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं प्रोयल गवर्नर का। द फॉलोइंग particulars refers to a proel governor with open arms. Okay, length of all arms 200 mm, distance of pivot of arms from the axis of rotation is 40 mm, length of extension of lower arms to which each ball is attached is 100 mm, mass of each ball is 6 kg and mass of central load is 150 kg. If the radius of rotation of the balls is 180 mm when the arms are inclined at an angle of 40 degree to the axis of rotation, find the equilibrium speed of the above configurations. तो इस न्यूमेरिकल में हमें इक्विलिब्रियम स्पीड फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ें गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम जी, यहाँ न्यूमेरिकल में कहा गया लेंथ ऑफ द आर्म इज 200 mm। तो यहाँ पर जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल में पीएफ आर्म्स क्या है, अपर आर्म्स को यहाँ पीएफ से डिनोट किया गया, पीएफ, और लोअर आर्म्स को यहाँ पे डीएफ से डिनोट किया है हमने। तो जो पीएफ और डीएफ है इनकी वैल्यूज इक्वल है और ये 200 mm के हैं, ठीक है। पीएफ एंड डीएफ इज इक्वल टू 200 mm। नेक्स्ट, यहाँ पर जो पिवट पॉइंट्स हैं ये वैल्यूज पी क्यू एंड डी के ये 40 mm दिए गए हैं। पी क्यू एंड डी के इज 40 mm, ओके, एंड एच जी ऑल्सो इज 40 mm, ये डिस्टेंस। नेक्स्ट, यहाँ पर जो एक्सटेंशन आर्म का लाइन दिया हुआ है जिसे बी एफ से डिनोट किया है हमने यहाँ, वो गिवन है 100 mm। मास ऑफ द ईच बॉल इज 6 kg, मास ऑफ द स्लीव इज 150 kg, okay. Here radius of rotation is given 180 mm, 180 mm सेंटर पॉइंट, बॉल के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये 180 mm गिवन है हमें, ओके। एंड अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, इंक्लिनेशन जो है वो 40 डिग्री गिवन है, ये दोनों एंगल्स, ओके। इक्विलिब्रियम स्पीड पूछी गई है, हम लिख लेते हैं लेट कैपिटल एन इज इक्वल टू दी
इक्विलिब्रियम स्पीड. Okay. ओके, वी नो दैट रॉयल गवर्नर में जो क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए थे, डेरिवेशन किया था, तो जो हाइट ऑफ द गवर्नर है उसके लिए और उसमें जो रिलेशंस हैं उस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि इस आई पॉइंट के अबाउट हम फोर्सेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लें. सॉरी, टेक आई पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे, तो जो अलजेब्रिक सम होना चाहिए सभी फोर्सेस के मोमेंट का वो 0 आना चाहिए अबाउट द पॉइंट आई. तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने होंगे. यहाँ पर P से H तक की अगर हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आई के अबाउट मोमेंट चाहिए, तो हमें B से लेके M तक की डिस्टेंस डिटरमाइन करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट क्योंकि ये इंक्लाइंड है एक्सटेंशन आर्म, तो यहाँ पर आप देखें एक्सटेंशन आर्म के इंक्लाइंड होने से ये जो डिस्टेंस है हमारी P से लेके H तक की, पहले हाइट ऑफ द गवर्नर हम फाइंड आउट कर देते हैं. ये हाइट ऑफ द गवर्नर, ये डिस्टेंस P से H तक की डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं. तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल PHF, PH इज इक्वल टू PF cos 40 degree. PF is equal to 200 mm, cos 50 is equal to 0.766. So PH will be equal to the 153.2 mm. ओके, और इसे अगर मीटर में हम कन्वर्ट करें और इट विल बी इक्वल टू दी 0.153 meters. Okay. Okay. नेक्स्ट, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एफ एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन एफ एच विल बी इक्वल टू द PF sin 40 degree. Again PF is 200 into sin 40 will be equal to 0.643. So FH will be equal to 128.6 mm और 0.128 मीटर्स. FH अगर हमारे पास टोटल F से H तक का डिस्टेंस हमारे पास 128.6 mm है, सो J टू F वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो फ्रॉम figure JF will be equal to the JG minus HG minus FH, ये होगा. Okay, now JF will be equal to the J to G, JG
इज इक्वल टू दी 180 mm, क्योंकि ये रेडियस ऑफ रोटेशन है, माइनस एच जी इज 40 mm and fh is 128.6. So j to f will be equal to the 11.4 mm. Okay. Now bj, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमें अगर फाइंड आउट करनी हो, b to j, so bj will be equal to the under root bf square minus jf square. Here bf is length of the extension arm, which is 100 mm, and jf has been calculated, it is equal to the 11.4 mm. So from here bj is equal to the 99.4 mm. Okay. Okay. Now from right angle triangle, I and J, and right angle triangle D and F, sorry, not J, this is I and F and D and F. Here ID, I to D will be equal to the IN plus ND. ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, so IN will be equal to the ND. Now ID will be is equal to 2 into IN और से 2 into ND. इसको हम N से D में कन्वर्ट कर लेते हैं. Okay, ND plus ND. Here from the rectangle NDHF, FH is equal to ND, and FH is equal to the 128.6. So ID will be equal to the 2 into 128.6, which is equal to 257.2 mm. Okay. Now taking moment about the point I. Taking moment about the point I. Okay. FC force acting in minus x direction. Okay. So moment about the point I will be equal to Fc into Bm. Okay, is equal to the mg into Im plus
mg/2 into id. Bm is equal to 252.6 equal to mg is 6 into 9.81 into Im is 117.2 plus capital M is 150, 9.81 divided by 2, id is 257.2. Fc will be equal to the Fc will be equal to the 1096125 divided by 252.6. It will be equal to 776.4 newtons. Okay. We know that centrifugal force is equal to mr omega square, 776.4 newtons. Omega is 2 pi nt by 60 whole square, 776.4 divided by 6 into r is equal to the 0.18 meters. Now n square will be equal to the 776.4 upon 0.012, 64,700, and n will be equal to the 254 rotation per minute. So this will be the equilibrium speed. Okay. सिंपल न्यूमेरिकल था, सिंपल क्वेश्चन है. अब बात करते हैं हार्टनल गवर्नर के. What is Hartnell Governor? Hartnell Governor is a spring controlled governor. यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर हार्टनल गवर्नर में सेंट्रल स्पिंडल हमारे पास है, एक सेंट्रल शाफ्ट है. शाफ्ट में एक फ्रेम अटैच रहता है. देखिए ये फ्रेम है हमारा, दिस इज द फ्रेम, और ये फ्रेम से अटैच है हमारे पास आर्म्स. ओके. यहाँ एक बेल क्रिंग लीवर होता है. बेल क्रिंग लीवर के एक साइड में जो स्लीव से अटैच है वहाँ रोलर होता है, और दूसरे एंड पर एक फ्लाई बॉल्स. ठीक है. बेल क्रिंग लीवर हैज बीन पिवटेड एट दिस पॉइंट विद द अपर फ्रेम, और जो लोअर आर्म्स हैं उसमें जो बॉल्स हैं, रोलर्स हैं, वो स्लीव में फिट रहते हैं. फ्रेम और स्लीव के बीच में कंप्रेस स्प्रिंग होती है.
इनिशियली, और उसे नट से ऊपर से टाइट कर देते हैं फ्रेम को। स्पिंडल रोटेट करना जब स्टार्ट करता है तो फ्रेम रोटेट होता है, और फ्रेम जब रोटेट होता है तो पिवट पॉइंट्स पे ये आपके बेल क्रैंक लीवर्स हैं। बेल क्रैंक लीवर भी रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे जो बॉल्स हैं इन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है बाहर की साइड, अपोजिट साइड डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होने से बेल क्रैंक लीवर का अपर आर्म जो वर्टिकल आर्म है वो बाहर की तरफ मूव करता है, और लोअर आर्म स्लीव को अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। स्लीव का मूवमेंट बॉल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एज वेल एज स्प्रिंग, कंप्रेस स्प्रिंग से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उन दोनों पर डिपेंड करता है कि स्लीव कितना मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे हम लोग हार्टनेल गवर्नर के लिए। So Hartnell Governor is a spring loaded governor. It consists of two ball crank levers pivoted at the point O to the frame. The frame is attached to the governor spindle and therefore rotates with it. अगर स्पिंडल रोटेट होगी तो एज वेल एज फ्रेम भी रोटेट, अगर फ्रेम रोटेट होगा तो स्पिंडल से फ्रेम रोटेट होगा और उसके साथ साथ बैल क्रैंक लीवर्स भी रोटेट होंगे। नाउ लेट small m is equal to the mass of each ball, small r1 is minimum radius of rotation in meters, small r2 is the maximum radius of rotation in meters, omega 1 is the angular speed of the governor at minimum radius in radian per second, omega 2 is the angular speed of the governor at maximum speed radius in radian per second, and capital S1 is spring force exerted on the sleeve, okay, and omega 2 is the omega S2 is equal to S2 is spring force exerted by the sleeve at speed omega 2. Okay, let Fc1 is the centrifugal force. देखिए जब बॉल्स रोटेट होंगे, फ्रेम स्पिंडल रोटेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेम भी रोटेट होगा, और अगर फ्रेम रोटेट होगा तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा बॉल्स पर, क्योंकि बैल क्रैंक लीवर से अटैच्ड है, तो यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा। तो here Fc1 is the centrifugal force at omega 1 in newtons, और हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू होता है mr ओमेगा स्क्वायर। Fc2 is the centrifugal force at omega 2 in newtons, और इसकी वैल्यू होगी mr2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ओके, स्मॉल s is the stiffness of the spring। अब यहाँ पर हमने एज्यूम किया let x is the vertical height of the arm ball crank lever and small y is the horizontal length of the horizontal स्लीव आर्म भी बोलते हैं, बॉल आर्म बोलते हैं इसे, तो बॉल आर्म और स्लीव आर्म। ओके, नाउ consider the force acting on the ball crank lever at one ball crank lever. The minimum and maximum position of the governor can be shown by
मिनिमम स्पीड्स में के कंडीशन में वर्टिकल आर्म अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट होगा और मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन में वर्टिकल आर्म थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। क्लियर? यहाँ जो बॉल है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा Fc1 और मैक्सिमम के केस में, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी केस में Fc2। क्लियर? लेट दिस इज द पॉइंट B, ये भी आपका पॉइंट हो जाएगा B। तो जो रेडियस ऑफ रोटेशन होगी अगर उसे हम फाइंड आउट करें तो रेडियस ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू द दिस विल बी इक्वल टू द R1। ओके, सपोज ये डिस्टेंस जो है आपकी ये A1 है। सिमिलरली यहाँ पर जो टोटल रेडियस ऑफ रोटेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू द R2 और इस स्मॉल वैल्यू को ले लेते हैं A2। ये टोटल डिस्टेंस होगा R2। मीन रेडियस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं स्मॉल r है। एंगल, अगर ये एंगल θ1 है सपोज, तो ये भी एंगल θ1 होना चाहिए, 90 डिग्री है आपका ये। और सपोज ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी θ2 ही आना चाहिए। ओके, यहाँ वर्टिकल आर्म x डिस्टेंस का है, हॉरिजॉन्टल आर्म y डिस्टेंस का है। क्लियर? लेट ये जो डिस्टेंस है जो ट्रैवल किया दैट विल बी इक्वल टू दी h1। यहाँ ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं h2। क्लियर? स्लीव इस पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड mg प्लस, और इसमें स्प्रिंग फोर्स भी होगा यहाँ पर S1/2। क्लियर? और सेकेंड कंडीशन में जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा स्लीव का वो होगा mg वेट ऑफ द स्लीव एंड स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये दो कंडीशंस हैं। पिवट पॉइंट है हमारा O पॉइंट और यहाँ जो वेट होगा बॉल का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल mg, और यहाँ पर ये वेट इस तरह से स्मॉल mg। ओके, नाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ मिनिमम पोजीशन पे मूवमेंट लेते हैं पॉइंट O के अबाउट। नाउ फॉर minimum position taking moment about the point O. mg plus s1 divided by 2 into y1 is equal to fc1 into x1 minus mg into a1। और mg plus s1 is equal to 2 upon y1
bracket close fc1 x1 minus mg into a1, equation number 1. Okay. Now taking moment about the point O for maximum position. mg plus s2 divided by 2 into y2 will be equal to the fc2 into x2 plus mg into a2. Clear? Or mg plus s2 will be equal to 2y2 fc2x2 plus mg a2. Equation number 2. Subtracting equation number 1 from equation 2, one from equation 2. यहाँ होगा S2 minus S1 is equal to 2y2 fc2 into x2 plus mg2 minus 2y1 fc1 x1 minus mg into a1. We know that S2 minus S1 is equal to SH. Difference between force applied by the spring will be equal to the stiffness of the spring multiplied by total deflection. Okay. So from here H is equal to R2 minus R1 upon into Y by X. Okay. Now replacing this value in equation, S2 minus S1 is equal to the small s into R2 minus R1 Y by X, or small s is equal to the S2 minus S1 upon R2 minus R1 into X by Y. Okay. This is the relation between stiffness of the spring and
radius of rotation of the governor. Okay. एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पे। Okay. A Hartnell governor having a central sleeve spring and two right-angled barrel crank levers. Okay. Levers moves between 290 rotation per minute and 310 rotation per minute. For a sleeve lift of 15 mm, the sleeve arms and the ball arms are 80 mm and 120 mm respectively. The levers are pivoted at 120 mm from the governor axis, and the mass of each ball is 2.5 kg. The ball arms are parallel to the axis of rotation, governor axis, at the lowest equilibrium speed. Determine the loads first. Loads on the spring at the lowest and the highest equilibrium speeds. And second is stiffness of the spring. तो ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ जो कंडीशन दी गई है उसे हम बना लेते हैं। ओके, मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड पर बॉल आर्म आपका स्ट्रेट वर्टिकल है, और अगर ये वर्टिकल होगा तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा Fc1, ये पॉइंट हम मान लेते हैं B1, और यहाँ जो रेडियस ऑफ रोटेशन होगी R इज इक्वल टू होगा R। ओके, बॉल आर्म की जो लेंथ दी हुई है वो है 120 mm। लेट्स दिस पॉइंट है O और ये पॉइंट है A1, और Y1 की लेंथ दी हुई है 80 mm। ओके, यहाँ पर स्लीव वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन mg प्लस S1 अपॉन 2, और बॉल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा स्मॉल mg। सिमिलरली मैक्सिमम स्पीड के केस में जो बैलकन लीवर का बॉल आर्म है वो आउटसाइड में मूव करेगा। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा लगेगा इस पे जो वो है Fc2। सपोज ये पॉइंट है B2, यहाँ इस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक के बीच की डिस्टेंस होगी R2, ये, और ये है पॉइंट O। यहाँ स्लीप पर जो फोर्स होगा वो होगा mg प्लस S2/2, वेट डाउनवर्ड mg लगेगा हमारा,
ये x है और ये y। टोटल जो लिफ्ट है स्पीड वेरिएशन में वो 15 mm का है। ठीक है, ओके। डेटा हम मान लेते हैं लेट S1 and S2 are the spring load at lower and maximum higher equilibrium speeds. Okay, so ball arms are parallel to the governor axis at the lowest equilibrium speed, and the lower equilibrium speed has been given 290 rotation per minute. Okay, तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ रोटेशन होगा वो R1 वो आपके R के बराबर होगा जो कि 120 mm है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा अप्लाई होगा इस कंडीशन में दैट इज इक्वल टू दी mr ओमेगा स्क्वायर। FC1 इज इक्वल टू होगा यहाँ पर 2.5 इंटू ओमेगा 1 हो गया यहाँ पर 30.4 0.12। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो अप्लाई हो रहा है जो वो है 277 न्यूटन। 277 न्यूटन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अब हायर स्पीड पर रेडियस ऑफ रोटेशन अगर R2 है तो R2 इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। R2 अगर रेडियस ऑफ रोटेशन है, रेडियस ऑफ रोटेशन at N2 is equal to 310 रोटेशन पर मिनट। तो टोटल जो लिफ्ट होता है आर्म का दैट H इज इक्वल टू होगा R2 माइनस R1 y बाई एक्स। R2 हमें नोन नहीं है लेकिन H की वैल्यू गिवन है। 15 इज इक्वल टू दी R2 माइनस 120 y is equal to the 80 mm, x is 120. Now from here R2 will be equal to the 15 into 12 by 8 plus 120. So it will be equal to the 142.5 mm or say 0.1425 meters. Okay. Now centrifugal force about this maximum speed FC2 will be equal to mR2 omega 2 square. M is 2.5 kg, R2 is 0.1425 into omega is 2 pi N2 by 60. N2 is 310 upon 60 square. So from here centrifugal force FC2 will be equal to the 376 newtons. Okay. Now from both the conditions
mg plus s1 is equal to 2fc1 into x by y. फर्स्ट कंडीशन में हमने पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट लिया, स्मॉल एम जी जो वेट है बॉल उसका वो ओ पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट तो ज़ीरो आएगा। ओके, तो यहाँ पर स्लीव का वेट दिया नहीं गया है, तो जो S1 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 277 इंटू 120/80, स्प्रिंग फोर्स will be equal to 831 newtons. For highest position, mg plus s2 will be equal to 2 into fc2 x by y. तो यहाँ पर भी जो कैपिटल M है स्लीव का मास नहीं दिया गया है, 2 fc2 is 376 newtons, x is 120, y is 80, then s2 will be equal to the 1128 newtons. Okay, now stiffness of the spring can be calculated by stiffness of spring. Small s is equal to s2 minus s1 upon h. Here s2 is 1128, s1 is 831 newtons, small h is 15. So the stiffness will be 19.8 Newton per mm. This will be the stiffness of the spring. Okay.